So we have had some excellent talks on our first session in climate change, the code red for humanity. From Dr. Adil's talk, we took the climate story, which is also a water story. And it's not what the COP is telling us, but what the climate is telling us, that it's not just a carbon enterprise, but now it's a water enterprise, and it is the age of adaptation, not just mitigation. Then from Dr. Patrick, it was that we need to take a more comprehensive approach on climate change and bring all the stakeholders, the women, the children, the LGBT community, everybody, the youth on board if we want to have a meaningful action on climate change. And that COP, interestingly, he said, is more like a conference of polluters, the G20 getting together and then just patting each other on the back for whatever little false promises that they made. And that what he sees is that we are not on the path of being below 1.5, that is even going to be 2.5. So it was about climate justice, loss and damages. Then we had a talk from Ms. Aditi. Aditi explained to us what's happening in the Hindu Kush and the Himalaya region, how it's even worse affected by the climate change. The temperature rise is going even higher, and they need to start working on what the adaptation measures they can put in place. And also the tools that can be used for the loss and damages. They're monitoring the droughts, the precipitation, the temperature changes, and how those tools and the data can be used for accessing the finances. तो हमारे पहले सेशन में हमने बहुत ही बेहतर बातें की माहौलियाती तब्दीली, कोड रेड इंसानियत के लिए पर, और आदिल नजम साहब की बातों से हमने माहौलियाती कहानी में, जो कि पानी की कहानी भी है, और ये वो नहीं जो कॉप हमें बता रहा है, ये वो है जो माहौल हमें बता रहा है। अब ये सिर्फ कार्बन इंटरप्राइजेज नहीं, बल्कि ये वो अब आबी इंटरप्राइज है, और ये वक्त तहकीक का नहीं बल्कि मवाफ़क़त का है। और फिर डॉक्टर पैट्रिक से हमने सुना कि हमें बहुत वसी नुक्ता नज़र अपनाना होगा और तमाम लोगों को अपने साथ लेकर चलना होगा, ख्वाह वो मर्द हो या औरतें, LGBT कम्युनिटी या नौजवान। और ये कि कॉप आलूदगी की तरह ये है जिसमें G20 ममालिक मिलकर हमें पानी से मुतालिक अपने किए गए झूठे वादों पर भी बात करते हैं, और वो देखते हैं कि हम 1.5 नहीं बल्कि 2.5 से भी नीचे जा रहे हैं। तो माहौल अब सिर्फ नुकसान का नाम है। फिर हमने बात की मोहतरमा अदिति साहिबा से, जिन्होंने हमें बताया कि हिंदू कुश और हिमालय में क्या हो रहा है और कैसे ये इलाके माहौलियाती तब्दीली से मुतासर हो रहे हैं। दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है, इनको फौरी तौर पर अमल दरामद करना होगा, और ऐसे आलात कार पर जो कि तबाहकारियों को जांचने और उन पर नज़र रखने, दर्जा हरारत को नापने और इसके अखराजात तक रसाई में मददगार साबित होंगे। Then we had an interesting talk from Roberta, where she explained to us the Youth for Climate initiative by the Italian government in partnership with the COP26 management, and how the youth can be better engaged, because as we have seen from Greta and many other examples around the world, that it is their future, it is their planet, and they need to be part of this engagement. फिर हमारी बहुत ही दिलचस्प बात हुई, जहां उन्होंने हमें बताया कि एक तंजीम यूथ के बारे में बताया, जो एक पहल है हुकूमत की COP26 मैनेजमेंट के साथ, और कैसे नौजवानों को बेहतर तौर पर मसरूफ़ रखा जा सकता है। जैसे कि हमने कई मिसालें देखी हैं, मसलन ग्रेटर और कई दीगर लोग, क्योंकि ये इनकी दुनिया है, ये नौजवान हैं और इनको इस तमाम अमल में शामिल होना ज़रूरी है। And then we had a very wonderful talk from Rafe, giving us the perspective not just from the legal but also from the ethical perspective, which I felt that this 1.5 limit, we seem to have assumed that this is the politically acceptable limit that has been given to us by the global north, and even that limit they are not willing to keep. They are willing to move beyond 2, and why should that be acceptable? It has become acceptable because that has been given to us. And that could result in more than 150 million people dead. Now how could that be acceptable to anybody? And he gave the causes for this climate change, the main causes which he feels, which are the drivers: capitalism, consumerism, patriarchy and colonialism. और फिर हमारी बात हुई राफे से, जिन्होंने हमें ना सिर्फ कानूनी बल्कि अखलाकी तौर पर भी इस बारे में आगाही दी
कि ये 1.5 की हद जो कि सियासी तौर पर कबूल की जा चुकी है हमें शुमाली दुनिया से मिली है और ये हद भी है, अब वो रखना नहीं चाह रहे, वो 2 की हद से भी आगे जाना चाह रहे हैं और ये कबूल हुई है क्योंकि ये हमें दी गई है और इसकी शाखें निकलेंगी कि दुनिया के 1.5 मिलियन लोग मर सकते हैं, तो फिर आखिर ये कैसे काबिल कबूल हो सकता है। और उन्होंने माहौलियाती तब्दीली की वजूहात भी बयान की और इनके ख्याल में डाइवर्स, सरमायादारी, सार्फियत पर निज़ाम और इस्तेसार और इसकी बड़ी वजह है। फिर हमारी बात हुई महमूद नवाज शाह से, जिन्होंने माहौलियाती तब्दीली को किसानों के नुक्ता नज़र से बयान किया, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और गुंजान आबाद मुल्क है। इसका हम पर एक तनकीदी असर है और तहकीक से मालूम हुआ है कि इसके असरात हम पर पड़ना शुरू हो चुके हैं। Then, in our talk by Mr. Mahmood Nawaz Shah, we got a farmer's perspective on climate change. Pakistan being an agriculture country with a huge population, it is of critical importance to us. And he brought these interesting findings that climate change is already having an impact. Last year being one of the hottest climates, it's messed up our seeds and the crops that we are producing, and it's already impacting the yields. So we have had some really interesting talks which have given food for thought. If you have any questions, any things to further discuss, please get in touch with Hisar Foundation, and I'm sure they will convey your interest to them. Get in touch with them. Thank you. Now I'll request Ms. Sanam Bakshamusa, the General Manager of Hisar Foundation, to please give the vote of thanks. Thank you. Thank you, Dr. Zulfikar. What an interesting and insightful session that was. This webinar would not have been possible without the support of the following. Thank you to our keynote speakers for today, Dr. Adil Najam and Dr. Patrick Bond, for their insightful and provocative presentations. Thank you to all our esteemed speakers who shared their expertise and knowledge with us. Thank you to our lead sponsor, Engro Foundation. Engro Foundation has been supporting the Karachi International Water Conferences since 2015. A very big thank you to all our sponsors, International Water Management Institute Pakistan, HANS, and WWF Pakistan for their support and contributions towards the webinar series. I'd like to thank our technical partners, NED University and Panjwani Hisar Water Institute. A very, very big thank you to our media partners, Airwaves Media, the group which includes TV1, News1, FM 91, and Waseb for coverage of our webinars on TV, radio, digital, and social media. No mention of the Karachi International Water Conference is complete without a couple of people who I'm going to thank now. Thank you to Zohair Rashid, the visionary behind the Karachi International Water Conference. Zohair Rashid is the governor of Hisar Foundation, and it was his dream in 2013 to set up to launch the first Karachi International Water Conference, and today we are 5 conferences strong. Thank you to Ms. Simi Kamal, the chairperson and CEO of Hisar Foundation, who's a constant source of guidance and support to all of us. A special thank you to all my colleagues at Hisar Foundation, especially Faria O'Kelly, who is the pulse behind this webinar series, and Samin Huda, who has supported us at the Secretariat. Finally, thank you to all of you, our audience, for your participation and engaging questions. ये सेशन बहुत ही दिलचस्प रहा। ये वेबिनार मुमकिन नहीं था हमारे की नोट स्पीकर्स डॉक्टर आदिल नजम और डॉक्टर पैट्रिक के ताउन के बगैर। आपका बहुत शुक्रिया, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपनी पूरी टीम का, जिन्होंने अपनी माहौलियाती आरा से हमें वाकिफ किया। हमारे लीड स्पॉन्सर्स एंग्रो फाउंडेशन का भी बहुत शुक्रिया, जो कि 2015 से KIWC को ताउन कर रही है। हमारे तमाम ताउनकारों का शुक्रिया, जिनमें IWMI, WWF पाकिस्तान, जिनकी वजह से ये वेबिनार सीरीज मुमकिन हो सकी। हमारे तकनीकी मावन NED यूनिवर्सिटी और पंजवानी वाटर इंस्टीट्यूट का भी बहुत शुक्रिया। हमारे मीडिया पार्टनर्स TV1, News1, FM 91 और वसेब का भी बहुत शुक्रिया, जिन्होंने टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर इस वेबिनार की नशर करने में हमारा साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ज़ोहैर रशीद। KIWC जिनका ख्वाब था 2015 में पहली KIWC मुनक्किद कराई जाए। बहुत शुक्रिया मोहतरमा सीमी कमाल, जो कि CEO हैं हिसार फाउंडेशन की, और जो हमारे लिए हमेशा मशअल राह रही हैं। खालिसतन शुक्रिया तमाम हिसार फाउंडेशन की टीम का,
खास तौर पर फारिया अकीली, जिन्होंने इस वेबिनार को कामयाब बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया, और समीन हुदा, जिन्होंने हमारे साथ सेक्रेटरिएट में बहुत ताउन किया। आखिर में तमाम नाजरीन का शुक्रिया। Our next webinar on circular water economy in urban context is going live on the 30th of November between 4 to 6 p.m. Kindly tune in to FM 91, News 1, TV 1 and Hisar Foundation for more updates. Hisar Foundation and Engro Foundation, in association with TV1, News 1, Waseb and FM 91, presents the 5th Karachi International Water Conference webinar series on climate change and pandemic impact on water.